Okay, hey guys, welcome back to our stream. Now we are looking at the gold chart. So this is our gold chart in M5 minute time frame. Right now, if you ask me what is your view in gold, if you just see here in small time frame, what we see here, market made a change of character here and it made a breakup structure here, right? Then after, if you just zoom in, you can see here this big candle as called as a FVG. In this FVG, market tap and it given us a how many pips. If you just calculate from like low, if you have a layer, then it is like 85 pips, okay? Or if you have added a layer from here to here, it's like 35 pips. Right now it's running, okay? So that is how we made a trade, we made a profit today in gold. If you ask me, I can show you that today I closed, like look at this. So today I took a two trade, two of them has been booked in profit, and these are some buy and sell trade, okay? And those who are watching, like if you think so watching here, if you just look at the chart and if you have any doubt, you can ask me here. The reason I have taken a trade is the FVG here. You know that whenever market make a change of character or breakup structure, you have to wait for any order block or you have to wait for the fair value gap. Where I can see here, I find out there is a fair value gap and I kept my ASL below this fair value gap as a 50 pips of ASL, and already if you see that I booked most of my profit. So look at this, already we got a 65 pips, like already 1:1 it's done, okay? Already 1:1 it's done. Even though we are just holding it, my target is up to the supply. So those who are watching, if you think that you want to take a trade, you can take the trade and make some profit in it, okay? And these are the trade previously I took and I mentioned in our telegram and I mentioned you in a live. So many trade I have mentioned you live. If you just check it out our Friday stream, Friday मैंने बोला था कि ये सब ट्रेड लो, आप लोग का प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है? तो इसी तरह हम लोग ट्रेड लिए हैं एंड हम लोग को ट्रेड का प्रॉफिट भी मिला है एंड यू कैन चेक इट आउट, दिस आर द रनिंग प्रॉफिट। एंड ये वाला फेयर वैली गैप है एंड फेयर वैली गैप से ही मार्केट चल रहा है ऊपर। एंड मैंने ये वाला ट्रेड लिया था एंड इस पे मैंने बुक भी कर लिया, ठीक है? सो इफ यू वांट टू सी, दिस आर माय क्लोज्ड, ओके, दिस आर माय क्लोज्ड अकाउंट जो मैंने क्लोज कर दिया एंड अभी ओपन लाइव पे चल रहा है बहुत सारे ट्रेड मेरा, ठीक है? एंड ये अभी भी ऊपर जाएगा मार्केट। रीज़न क्या है मैंने अभी बताया था आप लोग को, एंड दोस्त आर वाचिंग न्यू अगेन, उसके लिए मैं फिर से बता देता हूँ कि यहाँ पर मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था, राइट? सो दिस पोजिशन इज मेड अ चेंज ऑफ कैरेक्टर हियर, हियर इट मेड अ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। आफ्टर ब्रेकअप स्ट्रक्चर आपको देखना चाहिए वहां पर कोई ऑर्डर ब्लॉक है कि नहीं। इफ यू फाइंड आउट एनी ऑर्डर ब्लॉक और इफ यू फाइंड आउट एनी फेयर वैल्यू गैप, कीप योर एसेट बिलो द फेयर वैल्यू गैप एंड एंटर इन अ ट्रेड। जैसे मैंने यहाँ पर टेलीग्राम पे आप लोग को दिखा रहा हूँ। सो मैंने ब्रेकअप स्ट्रक्चर चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद फेयर वैल्यू गैप पे मैंने एंट्री किया था, मेरे को 65 पिप्स मिला है, ऑलरेडी मैंने ये बुक कर चुका हूँ, ठीक है? एंड मैंने जैसे देखा कि भाई फिर से मार्केट कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया तो मैंने बाहर आ गया, फिर से मेरे को मिला तो आई विल एंटर इन अ ट्रेड एंड आप लोग भी ले सकते हो। तो मैंने कहाँ से लिया था आप लोग को देखा देता हूँ, मैंने लिया था 4079 से लिया था, 408 से, ठीक है? अभी देख रहे हो 8079 जहाँ से मैंने एंट्री किया था, यहाँ पर है वो जोन, तो मैंने वहाँ से एंट्री किया हूँ। आई टूक अ ट्रेड and made some profit in it and my target is up to here, which is this supply, ठीक है? ये सप्लाई तक मेरा टारगेट है एंड आप लोग चाहते हो इस सप्लाई तक आप लोग टारगेट रखो एंड आपका एसएल रहेगा इस फेयर वैल्यू गैप के नीचे एंड टारगेट दिस सप्लाई up to this will be your target. So let me know in the comment box how many of you have entered and you just holding your trade, ठीक है? This is our supply and my target will be up to that. Got it, guys? So those who are watching, those who have taken a trade, I hope you made some profit. So look at my closing position and open position, still 4 trade is going on my open position, like $6,000, okay, $4,000, $3,000. These are the trade I have given you in our live stream and I told you to hold this trade, it will go much more upside. So if you have followed our instruction and taken this trade,
you have made a good profit for that. Okay, and right now just to see that market is making a range here, right? You can check it out. Market is making a range here. From here to here it's making a quite little bit of range. तो रेंज ब्रेकआउट हो जाए तो फिर से मार्केट और भी ऊपर जाएगा. ओके, तो आप लोग फिर से एक बाय ले सकते हो. यू कैन टेक अ बाय इफ द रेंज ब्रेक्स. ओके, and already I made a $400 of profit, so I'm not taking now. Quite you see that whenever I try to enter I got a 20 to 30 pips, but my break even is like got hit. So इसीलिए मैं अभी नहीं एंट्री कर रहा हूँ क्योंकि बार बार ब्रेक इवन हिट हो रहा है मेरा, क्योंकि मार्केट पे अभी रेंज हो रहा है, बट ये मार्केट ऊपर जाना चाहिए. एंड और एक चीज़, आप लोग को लग रहा है कि भाई फेयर वैल्यू गैप हिट हो गया अभी तो सेल जाएगा, ऐसा नहीं है. यहाँ पर भी एक ट्रेल लाइन है, आप देख पाओगे कि यहाँ से एक ट्रेल लाइन आ रहा है. ठीक है, तो मार्केट थोड़ी बहुत तो नीचे आएगा. If fair value gap break, then you will get a little bit of downfall, like up to here, maybe like this range or this range below you will get a sell. ठीक है, बट मेरा व्यू है अभी के लिए तो बाय, क्योंकि मैंने चेंज ऑफ कैरेक्टर ब्रेकअप स्ट्रक्चर मैंने देख लिया. सो यहाँ पर ये हो गया ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ये हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर. ओके, तो इसीलिए आप लोग चाहते हो आप लोग भी ले सकते हो. ठीक है, ट्रेड आप लोग लो ट्रेड एंड यू कैन यूज इट. अभी भी देखो फिर से एंट्री पॉइंट पे आया है, तो आप चाहते हो तो 0.01 पे ले सकते हो. नो प्रॉब्लम, राइट. टेक इट विद लो रिस्क. 0.01 जाए तो भाई $5 आए तो भाई आपका कितना पिप्स आएगा आप भी कैलकुलेट कर सकते हो. 79 से 96 जो भी है कम से कम देख सकते हो. 160 पिप्स तो 170 पिप्स तो कम से कम आप लोग को आ जाएगा. $5 लॉस हो गया मान लो, बट आ जाए तो $17 आपका प्रॉफिट मिलेगा. ठीक है, तो इसी तरह आप लोग इस जोन को यूज कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो. यू कैन टेक दिस जोन एंड यूटिलाइज, बट व्हेन इट ब्रेक्स यू कैन एंटर वन मोर टाइम. ठीक है, इफ यू थिंक दैट मार्केट इज मेकिंग अ रेंज, तो अभी रेंज पे मत एंट्री नहीं करना चाहते हो तो वही ओके, बट इफ इट ब्रेक दिस रेंज आई कैन सजेस्ट दैट फिर से तुम एंट्री कर सकते हो यहाँ पर. ठीक है, एंड ये अच्छा खासा बाइंग मिलेगा आप लोग को. जैसे देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक देखने में छोटा लग रहा है, बट इफ यू जस्ट कैलकुलेट फ्रॉम लाइक दिस एरिया टू हियर इट्स क्वाइट लाइक लुक एट दिस, इट्स 50 pips. Nowadays you get easily 50 pips of candle. Okay, and this is what happens. So these are my open trade. I have taken in a Ethereum, I have taken in a US oil, I have taken in USD JPO and Bitcoin, so you can check it out. Bye. So I hope you can see that and you can check it out, right? You have any other question you can ask me. So simple concept, I have taken this trade and I made it, and I can show you this closing position. These are my two trade, like 20 pips, 20 pips I go made, and these are my break even hit. Okay, so I cut when market came to my break even. Due to that range I just came out. Okay, so I would say that take a trade in a buy and look at this, as I'm mentioning you, like 79 to 82, it's like 30 pips. Easy move, 30 pips you can get. Take it. So take, make money and come out. Your AC will be below this FVG and make some profit in it. And range भी breakout हो जाए तो भाई फिर से जाओ, सप्लाई तक तुमको मार्केट पे प्रॉफिट मिल जाएगा. एंड रीजन तो आप लोग को पता है, जो फॉलो एसएमसी, जिसको एसएमसी पता है, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने के बाद आप लोग डायरेक्टली एंट्री नहीं कर सकते. ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने के बाद मार्केट को रिटेस्ट होना चाहिए.
रिट्रेस के लिए आपको चाहिए कोई ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, नहीं तो चाहिए आई मीन नॉट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, आपको चाहिए कोई फेयर वैल्यू गैप, नहीं तो ऑर्डर ब्लॉक, नहीं तो सप्लाई और डिमांड इसी जोन पे आ जाए, तभी एक अच्छा खासा मार्केट वॉलेटाइल होता है एंड वहाँ पर मार्केट पे मूव होता है। ठीक है, तो इसी तरह आप भी ले सकते हो ट्रेड एंड यू कैन मेक सम प्रॉफिट एंड यू कैन चेक इट आउट। मैंने जो ट्रेड लिया हो उसका $3000 प्रॉफिट है एंड $6000 का प्रॉफिट है, आप लोग भी देख सकते हो। एंड यूएसडी जेपीआई पे $400 का प्रॉफिट। सो इफ यू आस्क मी, लेट मी शो यू दी ट्रेड। ओके, सो बीटीसी ट्रेड आई विल शो यू व्हाट इज द रीजन ऑफ टेकिंग दिस ट्रेड। एंड मैंने आप लोग को बताया था, ये देखो पूरा एरो मार्किंग सब है यहाँ पर, मैंने मार्किंग करके भी बताया था, ये है बीटीसी, ये सब तुम लोग को मैंने बताया था, ये देख सकते हो। मैंने क्या बताया कि भाई यहाँ तक तो भाई मार्केट जाएगा। रीज़न क्या था आप लोग भी देख सकते हो, मैं छोटा टाइम फ्रेम पे देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर मार्केट ने बार बार रेस्ट कर रहा था एज अ सपोर्ट। ठीक है, तो जब मार्केट इसको आया था, मैंने ये थोड़ी लेट पे एंट्री किया था, फिर भी वी मेड अ ह्यूज प्रॉफिट। लुक एट दिस, अ 5 मिनट कैंडल, लुक एट दिस इन अ 5 मिनट कैंडल। तो I think it's in a news something like this. How many pips is that? 190 to 200 pips. Yeah. So it's a 1000. Okay. So 190 to 110. Just 100 pips within a minute to 5 minute. We just made that. So these are the trade. Look at that. It seems like, look at this. Many sellers are here. They kept the resale right here. Market did one spike and removed all the sellers. So that is how Bitcoin moves. And in Bitcoin, I mentioned you clearly like why you should take a trade, what is the reason, and I am holding this trade again. Okay, so check it out. From here we took a BTC trade and it's running it. And you know that when you take a BTC trade, same way Ethereum also move. Okay, so if you ask me, I took and I marked you and showed you कि भाई मार्केट इस जोन से ऊपर जाएगा, जो ऑलरेडी ऊपर मूव किया था, उसके बाद मार्केट ने सेल पे गया था, फिर से मैंने देखा कि ये जोन मिस आउट हो चुका था, आई डिडंट टेक सेल, then I took a one more buy after doing a retest from this zone. I took a trade from here, okay, and I made a 40 pips. Actually we got made a good move, look at this. So 40 pips, no, yeah, that much move is called only 40 pips. Look at this, that much a move, it is only a 40 pips. So that is how slow market in and low volume in Ethereum. And US oil, I have mentioned you and told you clearly that US oil go for the buy. Keep your resale below the zone, take a trade. So you can check it out in a small time frame. Weekly performance, I told you in a 5 minute, I mentioned you go for the buy, take a trade, take your risk. This is what we make. Okay, not in 5 minutes, I think like 30 minutes or 1 hour, long time frame. Yeah, so weekly we checked and we took this trade a little bit of late because we should have taken a trade from this area when market break, did a retest and started to form a candle, तो तब तुमको बाय लेना चाहिए था। मैंने थोड़ी लेट पे लिया था, फिर भी मेरे को 300 पिप्स का प्रॉफिट चल रहा है, 320 पिप्स ऑफ प्रॉफिट। आई एम जस्ट मेकिंग इट राइट नाउ। ठीक है, एंड जस्ट फॉलो दिस जोन जो मैं दे रहा हूँ एंड आप ले सकते हो ट्रेड एंड यू कैन मेक इट। जैसे मैंने अभी तुम लोग को दिखाया था कि भाई चले जाओ बाई पे एंड देख सकते हो। फिर से मैंने यहाँ से बोला था 79 से 83.5। ओके, सो यू कैन चेक इट आउट। जब तक ये फेयर वैल्यू गैप ब्रेकआउट ना हो तब तक यू विल मेक अ प्रॉफिट इन अ बाई साइड। इफ फेयर वैल्यू गैप ब्रेक्स एंड फॉर्म अ कैंडल रेड इन बिलो दिस फेयर वैल्यू गैप, तब मार्केट आएगा नीचे रिटेस्ट करने के लिए, नहीं तो ये सीधा ऊपर जाएगा। एंड लेट मी नो, रेज योर हैंड एंड लेट मी नो कि भाई कौन कौन ये वाला ट्रेड लिया है। ठीक है, सो जस्ट वोट एंड लेट मी नो कि भाई आप लोग
बाई क्यों या सेल क्यों, आपका क्या व्यू है, जस्ट टेल मी इन कमेंट बॉक्स, ठीक है। सो दिस व्हाट वी टेकन इन गोल्ड, वी आर लुकिंग एट so volatile market nowadays. Let's check it out. Might see this small candle 5 minute, but let me calculate and show you. So it's a 80 pips. Okay, so that way how many of you have entered in a trade? कौन कौन बाय पे हो एंड कौन कौन सेल पे हो, लेट मी नो, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ यू इन अ बाय एंड हाउ मेनी ऑफ यू इन अ सेल, बताओ मेरे को कमेंट बॉक्स पे कि आप लोग का क्या लगता है। बराबर। So guys, let me know how many of you have taken buy trade or if you have taken a sell trade. Let me know your comment box and what is your target. Okay, that will be the important. So let's see, let's find out what we can take trade, and these are our live trade. Let's move on. Already I have closed. Okay, already I have closed my trade and I am still just waiting for the range breakout. If this range break, I'll just enter in a buy again, like here. I can put a buy stop, but the thing is I won't put now. If I put now, market might spike and execute our trade as a buy side. Then what would happen? Market has the possibilities to do a liquidity sweep in this zone. Okay, so let me know that you have entered in a buy or what, or you are in a sell or what. Okay, so if you have taken any trade, it is better to tell us so that we would know that how many of you have taken a trade. I have taken a 4 trade and this 4 trade is continuously running on, and this sum of my trade has been shared in our Telegram and we taken personally. And one more thing is that we did in live. Okay, we did live in Friday and we took this trade on live. If you just see, I put some buy order and sell order on Friday live stream. If you can just do rewind and check it out. फ्राइडे लाइव स्ट्रीम पे मैंने बाय ऑर्डर सेल ऑर्डर मैंने रखा था एंड मैंने पहले भी बताया था, एंड you will just check it out the US oil, I think not US oil, Ethereum, no, USD JPY, that USD JPY simple way मैंने मार्किंग करके मेंशन किया हो कि भाई it's a 4-hour zone. In 4 hours, if any side range break, go for the trade. I did mention and you can check it out. My target is done. This is our supply. Okay, my target is done. I'll just put the okay. Yeah. So this is our target is done already. मैंने already तुम लोग को फ्राइडे बताया कि भाई रेंज जब ब्रेकआउट करेगा उस जोन पे तुम ट्रेड करो, ठीक है। जैसे देख रहे हो कि भाई यहाँ पर रेंज ब्रेकआउट हुआ था, मैंने सीधा थोड़ी बहुत देर वेट करने के बाद मैंने एंटर किया बाय की तरफ, एंड दिस आर दी 4 आवर्स कैंडल। तो यू नो दैट मार्केट पे प्रेशर तो बन रहा था, तो मैंने सीधा ले लिया बाय एंड मेरा टारगेट हो चुका है डन। आई एम जस्ट डूइंग अ ट्रेलिंग। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई थोड़ी बहुत तो फेक मूव करके ऊपर की तरफ जाए, क्योंकि इस जोन से थोड़ी बहुत तो भाई बायर्स लोग का कंपटीशन करेगा कि मार्केट को पुश करने के लिए। सो
If it break this, then I'll come out. Otherwise, like, it will do a retest and it will go upside again. So that's my view. चेकआउट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या होता है यहाँ पर, ठीक है. एंड लेट मी नो गाइस, कौन कौन इस वाला जोन को फॉलो किया था एंड कौन कौन ये वाला ट्रेड लिए थे. All this zone I have marked here and I have given you this trade. All this trade, Ethereum, US oil. US oil was very clear. मैंने पूरा बताया था कि US oil पे क्या है, कि आपको देखना पड़ेगा US oil पे वीकली कैंडल. मैंने देख रहा हूँ वीकली कैंडल. जस्ट आई सॉ द वीक कैंडल इन US oil. You can check it out. Look, there is no other candle below this. You see here? So there is no other candle below this. If we see that oil has break this zone, then only market will fall up to here. Why up to here? You see that this will be the next move zone, high moving zone market. Okay, then I saw that there is no breakout, but we saw that it's moving upside. Okay, so what I did, when I saw that it's going on a bullish move, so in a small time frame I check it out and I took a trade and मैंने प्रॉफिट कर चुका हूँ, ठीक है. सो ये था मेरा यूएस ऑयल का ट्रेड. एंड आप लोग भी चाहते हो तो अभी देखने में थोड़ी बहुत लग रहा है कि भाई छोटा सा कैंडल है, इतना सा, but it's a weak candle, 1 week candle, and if you see my profit, that means you know that it's 300 pips of move. So you can't take a trade now in US oil. Look at this. So it's already 500 pips. That means you know that if you take a trade in 0.01 also, you're gonna get a $50 of loss. And I won't suggest you to take a trade now. Okay. And after that, weekly to 4 hours, week to 4 hours, check it out. And I have entered. Okay. So Bitcoin, Ethereum, and gold.
So view guys, those who are watching, let me know what's your view in gold. Cause I have marked my zone, I have marked my view I have given you, and tell me now what's your view, and have you taken any trade or what, from where you gonna take a trade. So let me know in our comment box. Those who are watching, like, if you still think that yes it's possible for the buy, let me know that have you taken buy or what. And already I've taken and made a profit today, so I'm just waiting for it, like no taking trade now due to the range. If I enter now, I'll get a 10 to 20 pips. Then what will happen? Again, market gonna hit our break even. So what's the reason of taking stress, right? So that is the reason I didn't take any trade. So BTC is giving a good buy side move. Like you can check it out, $7,000 of profit. Let's move this gold and other currency just like the BTC and all जो मैंने लिया था, and I marked you. Look at this was our trade on Friday. Okay, this is our trade on Friday. Nice move, nice trade. Check it out, and you can see that it already break this high. Okay, now market is going on a high, and there is no retrace zone here, so you can't expect where should I take a re-entry, cause in BTC there is no retrace zone right now in 5 minutes. There is no retrace zone in 15 minutes. So you see here, this is not a valid order block if you ask me, but you can try. But already it moved. Okay, so I'm not taking it. So those who are watching, like if you have taken any trade in gold, गोल्ड पे तो भाई रेंज ही हो रहा है. जो मैंने लिया था 50 पिप्स तो मेरे को मिल गया. फिर मैंने 2 ट्रेड लिया था तो मैंने 2 बुक कर लिया क्योंकि मार्केट थोड़ी बहुत साइडवेज पे चल रहा है. तो आई डोंट वांट टू टेक मोर रिस्क. लुक एट दिस 40 pips easy, 40 pips, 48 pips. Okay, so if we check it out, 41 pips. These are the trade which we got very easy. So I'll just take a little bit of try. Okay, I'll try taking in this trade and I'm gonna keep my SL here. First, market is doing a range, so don't worry, I'm not worrying it. Okay, let's see what happens. And don't try to enter now if your balance is very less, cause I have taken due to the range. From this range to I'll try to book my profit up to this range, and SL is same. And if you see that this is also like 1:1. Let me show you, like if I keep my target here. Okay, yeah, more than 1:2. This is 1:2. Okay, but I'm gonna take and keep my target like 1:80, like something. Okay, but my target is full up to here. Check it out and let me know that am I taking correct trade or what. And if you have taken trade, that means you should book some of your profit when it comes to the your profit zone and hold some of your trade. And you know that market is giving like a range, so due to that I have taken this trade, and still we can see that fair value gap is there. Where is our long position? It's like here I took this trade, my SL will be below this zone and my target is here, and I'll try to book some partial when it comes to like 30 to 40 pips. Okay, just gonna check it out how much are we making.
Okay. Well, every time market given us a 30 to 40 pips. Look at this. But this time it closed inside. Check it out. Let's see what happens. Okay. I close the trade after the candle close. Okay, still it's a 4 minute. Okay, 4075. That will be my hold. This time it seems market is breaking our fair value gap. Okay. Is it 50 pips? 50 pips. So 1 minute candle close will come out. Yes, it closed. Okay, so it didn't work in this. Then we have to wait for this zone. रेंज ब्रेक डाउन साइड, इसलिए मार्केट ने नीचे की तरफ मूव हुआ है. देखते हैं, ठीक है, इसको तो जाना चाहिए. So let me know in comments like what's your view. Okay, is it your buy view or sell view? मेरा तो भाई बाइंग का ही व्यू है, क्योंकि कैंडल तो भाई 5 मिनट का क्लोज भी नहीं हुआ ठीक से. 5 मिनट का कैंडल क्लोज होने पे कितना टाइम बाकी है? 1 minute. 5 minutes. Still we have a 2.5 minute. After 2.5 minutes, we might get a upside move.
Okay, there's no volume, proper volume in the market is doing just a range. Okay, so let us wait for this range breakout. If you do a break a range, then we can enter in a buy. Otherwise, if you see that if fair value gap already, you can see that it fulfilled. Okay, so what we can do is we have to wait after this candle close, then you can enter in a buy trade again. Just check it out, guys. Just check it out and tell me that how many of you have entered in BTC, also in Ethereum, US oil. कौन कौन क्या ट्रेड लिए हो भाई मेरे को बताना, and we can make some entry. Okay, just miss, bro, guys, just miss. Look at our trade analysis and our setup. We just missed one zone. How many pips? Not even a 10 pips. Okay, like almost like a 10 pips. Yeah, so due to that we missed how many pips, like if I, it's not 10 pips, this will be of 10 pips. Okay, so dollar has a low volume as the currency strength is low. We missed our trade in that. Okay, so I have taken a low risk one buy and you can check it out. So here I'll just come out this candle. Due to this OB. Okay, already the trade which I have taken executed, these all are done. Okay, and you might take now.
So just check it out. I have entered with a low risk and my ASL is like 68, which is like 70 pips of ASL. The thing is, the reason if you ask me, I have entered, this is our early entry due to the double bottom here. You can check it out. Okay, so for that I have entered, and below that we have a order block here. This one you can calculate and see this. This is not a strong order block, but we will utilize this as an order block and taken this trade. So check it out and you can enter. And if you have any doubt and question, you can ask me. Just put a comment and we will answer. And it's quite like market is in a little bit of down move, but let's hope for the best. Okay, just we will check it out what it's happened. Okay, it's no good. Yes sir. অতটাই দেখলাম তো, তার থেকে বেশি নেই। ফিল্টার গেছে, কালার করেশন, কালার কি এতে বেশি করতে গেলে তো আমার। Okay. Cut the trade भाई। So here we can see that there is a order block here, this zone. Market tapped this zone area and it started a little bit of move upside. I took a trade and I cut it down because I don't want to hold. Okay, when it comes to again to the same zone, we can enter again. Otherwise just leave it. And फेयर वाली गैप पे जो मैंने ट्रेड लिया था वो ऑलरेडी मैंने बुक भी कर चुका हूँ। एंड अभी थोड़ी बहुत ट्रेड
ओके इसके नीचे तक देख सकते हो 69 to 70, दैट मीन्स 40 पिप्स का एक एसएल बनेगा। आप लोग ट्राई करना चाहते हो कि इफ यू वांट टू एंटर नाउ then your SL will be like 40 pips. Okay, so like here I'm gonna enter from this zone, so that is the reason मैंने छोड़ दिया वो वाला ट्रेड। मैं यहाँ से एक ट्रेड लेना चाहता हूँ, ठीक है। these are fully buying zone. Okay, if you doing a swing trade then मैं सजेस्ट करूँगी भाई आप लोग बाय लेकर छोड़ दो, take a buy trade and just leave it. You can make it a good profit. So like FBG or a block and this is our retest zone जहाँ पर ट्रेड लाइन भी है एंड प्रॉपर वॉल्यूम है मार्केट का, तो यहाँ से भी मार्केट जाएगा ऊपर की तरफ। यू विल मेक इट लाइक 30-40-50 पिप्स इजीली, यू विल मेक अ प्रॉफिट। तो आप चाहते हो तो आप भी ले सकते हो ये वाला ट्रेड, ठीक है। दिस इज व्हाट इन आवर गोल्ड एंड यूरो यूएसडी पर जस्ट मिस ऑफ लाइक 10 पिप्स भी नहीं है, ये 3-4 पिप्स कुछ होगा, इतना ही गैप पे हमारा जोन एग्जीक्यूट मिस हो गया, ठीक है। लाइक 1.3 पिप्स ऐसे बोलता है, तो उतना ही हमारा डिफरेंस था। सो अदरवाइज वी वुड हैव टेकन दिस ट्रेड एंड आवर टारगेट इज अप टू दिस सप्लाई एरिया जहाँ पर मैंने मार्किंग करके रखा हूँ, लेकिन वी जस्ट मिस दिस ट्रेड इन यूएसडी। जीबीबी यूएसडी पर भी हम लोग का सेम व्यू था। ओके जीबीबी यूएसडी एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं, मैंने तो बाय ऑर्डर तो रखा था। अरे यार ओके इसने एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, मैंने बाय ऑर्डर रखा था इस पे भी, दैट यू कैन टेक अ बाय फ्रॉम दिस 4 आवर्स ऑर्डर ब्लॉक, चेक इट आउट। मार्केट में कितना पिप्स का गैप था भाई, it's okay. So just like 1 pips of something we missed our trade. Okay. না চার্জ তো কেন so we are looking at the trading view same, check it out, ठीक है। तो अभी भी यहाँ पर मार्केट है, तभी एक मार्केट पे मूव आएगा। अभी थोड़ी बहुत तो भाई मार्केट का जो वॉल्यूम है इतना भी स्ट्रांग नहीं है यहाँ पर, तो आई जस्ट वेट फॉर दिस वन टू टैप। तो भाई यहाँ से एक छोटा सा रिस्क ले सकते हैं हम। सो हियर for
should be our buy zone from this area. ठीक है, मार्केट को थोड़ी बहुत नीचे आने दो. चेंज ऑफ कैरेक्टर ब्रेकअप स्ट्रक्चर पे मैंने ट्रेड लिया था, मेरे को मिला था इतना तक पिप्स प्रॉफिट. उसके बाद अब भी देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक मिला था हम लोग को लाइक 57 पिप्स मिला था. फिर से हम लोग को देखे तो भाई 49 46 पिप्स मिला है. अभी थोड़ी बहुत मार्केट को नीचे आने दो क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर्ली चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है. यहाँ से एक मार्केट पे वॉल्यूम आएगा. रीजन देख पाओगे कि भाई यहाँ पर भी बहुत सारे जोन है यहाँ पर. तो यहाँ से मार्केट का एक वॉल्यूम आएगा तो यू कैन टेक अ ट्रेड फ्रॉम दिस जोन. ओके, सो रेडी फॉर 4065 टू टेक अ like buy. Okay, so give me a minute. ये कुछ स्क्रीन ऑफ होएगा छोटा ये कैसे सेट कर दिया. ओके okay, I hope you guys are ready for taking trade. Right now we took one trade which was from like this area. I have taken like multiple trades from this area, like I made a profit 2 times here, then again I entered, then I got a one SL hit. So right now again I'm gonna enter from this zone which is like 4065. That is my view. Let's see when market comes to this area. We will try taking a small trade with a low risk. Okay, we are not taking a high risk. We will take a trade from this and our SL will be here. Okay, so from like here I will try to take it buy. इसे मैं छोटा ही रखूँगा, ज़्यादा बड़ा नहीं रखूँगा. मेरा ये सब रहेगा इस वाला कैंडल के नीचे 4061 65 बाई एंड 61 SL एंड चेक इट आउट. यहाँ तक तो भाई हम लोग को मिलेगा. ठीक है, एंड मार्केट थोड़ी बहुत रिटेस्ट करते करते नीचे तो भाई बायर सेलर्स का तो भाई डोमिनेट कर रहा है. यहाँ से नीचे की तरफ तो भाई मूव होना चाहिए यहाँ. So from here I need to get a selling move up to here, then we will get a buy. किसी का कोई भी डाउट है आप बता सकते हो. आई होप आप लोग भी देख सकते हो कि भाई कहाँ से हम लोग का बाइंग का व्यू है. तो आप चाहते हो वहाँ से आप लोग भी बाई ले सकते हो. ठीक है, बाइंग का व्यू मैंने बता दिया, आप देख सकते हो. एंड यहाँ से आप लोग ले भी सकते हो ट्रेड. 4065 से मेरा बाइंग का रेडी रहना एंड वहाँ से आप लोग ले सकते हो. अभी तो 75 पर है, 65 पर आने दो, देन यू टेक अ बाय ट्रेड. जस्ट वेट फॉर 50 पिप्स. ठीक है, just wait for 50 pips to fall. Or if you guys are like what you call really interested कि हाँ अभी से बाय करना है तो भाई अभी से आप बाय कर सकते हो. ठीक है, नो इशू, यू कैन टेक अ बाय नाउ. बट द थिंग इज आपका एसएल बन जाएगा बड़ा. तो यहाँ से यहाँ तक एसएल मतलब 80 पिप्स का एसएल फॉर्म हो रहा है. तो आप चाहते हो कि भाई 80 पिप्स का मैं स्विंग ट्रेड करना चाहता हूँ तो भाई लॉट साइज कम कर दो, यहाँ से एक बाय ले लो एंड वन मोर बाय यू कैन टेक फ्रॉम हियर विच इज 65 लाइक 50 पिप्स के बाद और एक बाय ले सकते हो. लेकिन मैं तो भाई मेरा व्यू है यहाँ से बाय करने का, जहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ सेम थिंग्स. दिस आर माय ट्रेड. ओके, गोल्ड भी रेडी फॉर दैट. ओके, ये वाला ये देखो ये वाला मार्किंग है. बहुत सारे मूव हम लोग को मिस आउट हो चुका है. एंड एसएल भी मैंने मार्किंग करके रखा हूँ. कितना एसएल है यहाँ से 65 टू 61 40 पिप्स का एसएल बनेगा. तो check it out. Okay, it's coming down. Let's see. Are you guys ready? Let me know in comment box if you're ready, because I'm ready to take a trade. Are you guys ready?
আমারটা তো নিবি না কোথা থেকে দুটো রেখেছে না না ওটা ও হুম काम कर चुका So still we are waiting for our zone. So if you tap in this zone area like 64 something 64 not 65 you can enter in a trade. And यहाँ से अभी थोड़ी बहुत नीचे तो आना चाहिए मार्केट को अभी क्योंकि 1 मिनट में मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो लो है इस लो से टैप करके मार्केट को अभी नीचे जाना चाहिए ठीक है यहाँ से मार्केट को नीचे आना चाहिए 64.22 मतलब 65.22 पर आने दो उसके बाद हम लोग एंट्री करेंगे बाय के लिए Okay. और 65 থেকে বেরিয়ে যাবে 64 বলছিস তো Okay, it started to fall again. Just the way we mark कि भाई यहाँ से तो सेल गिरेगा ये तो गिर रहा है right? Check it out our analysis. Okay. How many of you are ready? Let me know. Okay. How many of you are ready? And maximum like 58 to 64. Okay. So a little bit of quite big SL. It will be like 60 pips of SL. Right. So better use your proper money management to take this trade. And I'm ready for taking this trade. If you guys are ready, let me know in comment box. Yes. So I will enter in a trade. So still it's in a 66.5. Let it come to touch 65.2. Then okay.
Okay. Okay, I just entered, and my ASL will be like, I will keep it up to 60 pips and up to this candle below. This will be my ASL. Okay. Target minimum 100 pips. Okay, minimum 100 pips. I want to keep it. And how many pips is this? Like it's a 310 pips, I think. How many pips is that? Target is 31. Yes, 310 pips something. Yeah, 300 pips of target and 50 to 60 pips of ASL. So let me know, guys, how many of you have entered and how many of you thinking to enter again. So just put a comment below and tell us. And I hope you can see the numbers now. The profit which is going on. Look at this. It's almost 20 pips. Okay, 20 pips done. So those who take like a high risk, they can reduce that lot size. Or if you haven't touched your zone, wait for that. And look at now, only 20 pips done. If you ask me, I can do a risk free now. Alright. Okay, 25 pips. Let's go. Okay, 30 pips done. Put your ASL in a cost to cost. Okay, right. Just try to keep your ASL in a cost to cost. So no more giving. And if you want, you can book some of your trade in a partial. ठीक है, किसी को लग रहा है कि भाई बुक करना है तो भाई थोड़ी बहुत बुक कर सकते हो आप. Okay, mine it's running 30 pips and above. So what I will do is I will book some of my profit. Okay, so देख सकते हो आप. Just check it out. How many? It's 36 pips. 36 pips gone, guys. Keep your ASL in cost to cost. $178. So if it goes 200, that means we are in a 40 pips of profit. Okay, because I booked already. So 140 pips means like 280 pips. 150 means 330 pips of profit. Okay, 30 pips of profit we are running it. Take it out. Still we are running in a 30 pips. 66 to 69. Okay, 30 pips done. Not only 30 pips, we made a 30 pips and above. You can check it out, guys. It's a 40 pips done. 45 pips it's done. Okay, look at this. I'll just mark and show you that how many pips it's done. From here to here, you can look at this. And look, 50 pips done. Okay, so if anyone want to book some partial, again I can say that book. I have booked half. Now keep your ASL cost to cost. Okay, don't try to hold your trade.
So ACL will be na cost to cost. Mine is here, like, yeah. Because already I have booked my profit. एंड यहाँ से मार्केट एक रिजेक्शन हो सकता है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ी बहुत आप लोग बुक कर लो प्रॉफिट को. एंड कौन कौन ये वाला ट्रेड लिया है मेरे को बताना, क्योंकि अभी आप लोग को दिया मैंने ये वाला ट्रेड. सो ये कान से कि भाई आपने कोई ट्रेड नहीं दे रहा हूँ. अभी देख सकते हो 50 पिप्स ऑलरेडी डन हो चुका है. Keep your ASL in a break even, okay? Or you can keep it at least like 67. You can keep it at least like $10. You can make it like $1 at least, 0.01 traders, okay? So like from this area again you'll get a buy move. So from this 68, let's see. Okay, who is making money, guys? Who is making money? Let me know in comment box. You see that? It's a 50 pips. Okay. 50 pips of 250, 265 means that means more than that. 50 pips done already.
ওই এখন ইনফরমেশন যেতে হবে। This haven't taken anyone. No one taken this trade, guys. Okay, it seems my break is gonna hit. So if it hit, we will enter again. Okay, we will enter again, but this time we will enter from below, like here again, 65 to 64. Okay. Are you guys ready to take a re-entry trade? So re-entry trade gonna be from this low area. From here, we're gonna take a re-entry trade. Okay. From this area right here. Look at one single candle in a minute, it giving us a good profit, but I didn't take it. Like almost like 35 pips in a single minute candle.
What do you think, guys? Will market comes again to do a retrace or what? So even a single candle has given us a 30 to 40 pips of move. Check it out. 33 pips. And overall it moved up to here to here, which is a 46 pips, right? So that is how market is moving now. Really a slow move, right? So we will check it out what happens. Let's see. Just checking out, market is making a little bit of different, like here it's making a range. Okay, so we should be ready to take a trade, and let's hope for the best. My view is buy in a gold, but that we are just waiting to tap the market here, which is in a 65.2. If we tap again, then you can enter one more time. Okay, so if you tap in 65.2 or 65 something, then you can enter in a trade. Until that, like a market, you will get a little bit of like sideways move, a little bit of range, that way. ठीक है, अदरवाइज कोई भी मूव नहीं मिलेगा, ऐसे ही चलता रहेगा. Quite slow market right now, right? By checking out, it's making a little bit of range, but the thing is we will enter in a buy from here again. So try to be ready from 4065. You can take a cold buy from here, and you can make some profit in it. And like BTC, it's going a very good buy. And if you just check it in a 15 minutes, there is no order block, no fair value cap, nothing is here. So no more trade in Bitcoin. And Euro USD, I think I have zone, like here is also there is no zone. Euro USD no zone. Then the same way there is no zone in GBP USD. Like GBP USD almost touch that zone. USD JPY, it already hit our target. We are just now waiting to break this zone. So if you guys see that it break this, did a retrace, go for the buy.
Okay, and US oil is a buy for the long time. Okay, I use this trade, I use this zone as a long time investment of so like that. Okay, I'm going to give you the zone. You can use this zone as a taking a trade. You can take a buy from this area 65 to 64. You can take this buy and you can keep your SL as a 50 pips, like 61. You can keep your SL. Okay, so that is only like 64 to 61 is 30 pips of SL. You can use that and you can take a buy trade. Until that, there is no more trade now, or if you break this 50 pips done, you can take a buy trade. That's it for the gold now. And due to the range, we can't see any other zone. Market is sideways. So what we're gonna do is we will close our stream now and we will see you on US season. Okay, so in US season we're gonna take a trade. So that's it for today. Thank you guys for watching, and if you have like any doubt and question, you can ask us in a Telegram. So do support us and see you on US to New York season market. Thank you for watching. Thank you guys. See you evening.